Hello everyone, myself Sudha. I'm studying third year MBBS in AIIMS Nagpur. Today we are here to discuss about your doubts in physics. Let's start our session with our first question, which is given us places A and B are 180 kilometers apart. See, place A, place B. These are 180 kilometers apart. On a highway, one car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in same direction, assume car A speed as V1 and car B speed as V2, and they are traveling in same direction at different speeds. And then they will meet in 9 hours. If they travel towards with each other with same speeds as before, they meet in an hour. What are the speeds of the two cars? हम सबको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर दो कार सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? v1 minus v2, assuming v1 is greater than v2. देन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? v1 plus v2. सो अभी हमको हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, तो हम v1 v2 कैलकुलेट करते हैं. सी v1 plus v2 equals to 180 kilometers divided by 1 hour. So ये 20 kilometer per hour. v1 plus v2. Next, v1 minus v2. 180 divided by 9. ये होगा 20 किलोमीटर पर आवर. अब हम ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. अब है v1 plus v2, v1 minus v2, 180, 20. अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेगा तो हमको आएगा 2v1 equals to 200, v1 equals to 100 kilometer per hour, and v2 will be 180 minus 100, 80 kilometer hour. वो they are asking about speed. So v1 will be 100 kilometer per hour, v2 will be 80 kilometer per hour. This will be our first question. See, next question is, a mass of m1 hanging at the end of n string draws a mass m2 along the surface of smooth table. They are indicating smooth table. It does means there is no friction between block and table. If the mass on the table be double, then the tension in the strings become 1.5 times. Then what is the ratio of m1 by m2? See, this is the table. This is m1. This is m2. See, assuming mass m2 is dragging m1, so what will be? Tension will be in upward direction. So mass draws a mass m2 along the surface of the smooth table, assuming here m1 is greater than m2. So m1 will pull the m2 downwards. So the equation will be m1g minus t equals to m1a, and
here the equation will be m2a equals to t1. Then what will be the acceleration? m1g minus, substitute t1 in first equation, then acceleration will be m1g by m1 plus m2. Then what will be the t1? T1 equals to m2a. So m1 m2g by m1 plus m2. Then we'll do second. What they gave was the mass on the table was double, then the tension became 1.5 times the previous one. So T2 equals to 1.5 times T1. So what will be this? T1 by 1.5 T1 equals to M2 will be, M2 dash will be 2M2. So M1 M2G by M1 plus M2 divided by M1 2M2. Substitute, the mass of M1 will be remains same, M1 plus 2M2G. Then T1 will cancel, G cancels, M cancel, M1 M2 cancels, M1 it will go up, this one divided by 2 into M1 plus M2. What will be on a LHS side? It is 1.5. So 2 plus 4 M2 equals to 6 M1 plus 6 M2 plus 3 M1. So what will be then? M1 by M2 will be 2:1. Option will be 2. See. An LCR circuit is equivalent to the damped pendulum. What does that mean? पहले हमको कैपेसिटर को चार्ज करके ये सीरीज में कनेक्ट किया, तो ये कनेक्ट करने के बाद डैम्प्ड पेंडुलम मतलब चार्ज विल बी discharging, charge and the capacitor will be reducing. In an LCR circuit, the capacitor is charged to the Q naught, then the connected to L and R. See, this will be the capacitor, resistance, inductance. The maximum charge and the charge given while it is connected is Q naught, and it is an equivalent to damped pendulum. Damped pendulum मतलब पहले pendulum का maximum पे होता है, slowly उसका जो भी energy है, जो भी है वो सारे reduce होते जाता है. तो इसमें भी जो capacitance है, capacitor के ऊपर जो maximum जो charge है वो slowly decrease होते जाता है. तो जो क्या पूछ रहे हो? If a student plots graph of the square of maximum charge Q at time t with the capacitor assuming different L1 होना चाहिए, जैसे L1 के टाइम पे इसकी चार्ज कैसे proportionality है उसका हम अभी देखेंगे. According to the Kirchhoff's first law, a voltage of the circuit, total voltage of the circuit is always equals to 0. So इसका capacitor का voltage Q by C naught, Q naught by C minus resistor का voltage minus IR, और इंडक्टर का minus LdI by dt. According to Kirchhoff's first law, ये तीनों का सम 0 होना चाहिए, और I का जो भी है वो I equals to dq by dt, क्योंकि I అనేది I मतलब here minus will take minus because charge will be retarding, मतलब decrease होते जा रहे हैं, so will take minus dq by dt. So substitute here. C Q naught by C
plus dq by dt into r plus l d square q by dt square इक्वल्स टू 0। ये हमको डैम्प पेंडुलम ना सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए हम इसको पूरा L से डिवाइड करेंगे, तो देन इट विल बी Q by LC प्लस dq by dt R by L प्लस d स्क्वायर Q by dt स्क्वायर। ये इक्वेशन कैसे जैसा लग रहा है? d स्क्वायर x by dt स्क्वायर प्लस dx by dt d by m प्लस k by m। इसमें एम्पलीट्यूड अगर लेना है इस इक्वेशन से, तो what it will be a equals to a naught e power minus dt by 2m। b की जगह पे क्या है? r। हमको किसके लिए चाहिए? q के लिए, तो q इक्वल्स टू q नॉट e पावर माइनस b की जगह पे क्या है? r rt बाई 2m की जगह पे क्या है? l। हमको q स्क्वायर की चाहिए, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू q नॉट e पावर r बाई l। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो e पावर नेगेटिव में कम होगा, e पावर नेगेटिव में कम है तो q नॉट वैल्यू ज्यादा होगा, तो q स्क्वायर इज डायरेक्टली मतलब then what will be the graph? q square at time t, it is L1, it is inversely proportional to or L2। See, next question. Prove that if external forces acting on the system is zero, then the center of mass move with constant velocity. See, ये है origin, a mass m1, m2, a distance x1, x2. Here center of mass कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? m1 x1 plus m2 x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 plus m2। ये सेंटर ऑफ डिस्टेंस इन दोनों का कहाँ पे आएगा? ये दोनों मास की सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? तो अगर हमको इसको डिस्टेंस को इंटीग्रेट करेगा तो हमको आएगा वेलोसिटी, तो m dx1 by dt plus d m2 dx2 by dt divided by m1 plus m2. Then what will be the velocity of the center of mass? m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2। अगर वेलोसिटी को हम वापस डिफरेंशिएट करेगा तो विल गेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 plus m2 a2 divided by m1 plus m2। सी, अगर F एक्सटर्नल फोर्स है तो क्या होगा? F एक्सटर्नल इक्वल्स टू m इंटू a। फोर्स एक्सटर्नल इज ऑल्सो डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम। सो हम मोमेंटम को डिफरेंशिएट करना है। मोमेंटम मतलब m dv by dt। अगर फोर्स एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन द सिस्टम जीरो है तो इसका मतलब dv by dt will be either constant or moving with uniform velocity. See, motion of the double star system on the basis of center of mass of motion. See, assuming here one mass and here second mass, the distance is r1, distance r2. So the objects will
सराउंड इन सच ए मैनर, वो पूरा सिस्टम स्टेबलाइज मतलब जैसे वो M1 M2 रिवॉल्व होगा इस पॉइंट की अराउंडिंग, so that system will be stabilized. Center of mass of a system will be always at a stable state, so that M1 M2 will always try to move in a manner so that जो पॉइंट है वो स्टेबल होने के लिए उसी पॉइंट के अराउंड रोटेट होते रहता है. See, a body of mass 10 kg dropped मतलब u equals to 0, height 20 meters, is dropped but with an initial velocity of 2 meter per second. It reaches the ground in a time t equals to 5 seconds. Find the final velocity of the body just before touching the ground. See, according to motion in straight line, we have 4 equations where v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square. So हम अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, v equals to u plus at. So body g will be 9.8 meter per second square. So v equals to u plus at. U is 2 meter per second plus g will be 9.8 into body reached the ground in 5 seconds. So what it will be? 2 plus 49. It will be 51 meter per second. The body reaches the ground with a velocity of v equals to 51 meter per second. We will use this equation here. Find the coordinates of the image of object P as seen through the periscope. The mirrors are inclined in such a manner that it is 45 degrees with the x-axis. The eye is placed at the level y equals to minus d. We all know that periscope contains 2 normal mirrors, 2 plane mirrors. There will be no concave or convex. It contains 2 normal plane mirrors. See, they are telling that mirrors are inclined at 45 degrees with the x-axis. See, first we will draw. It will be origin. The periscope will be here. One mirror will be here. One mirror will be here. Maybe the diagram will make you so much confusing. So we'll draw another one with only mirrors. See, the eye is placed at a distance d. See, these are 45 degrees with the x-axis. So assuming this will be the d, this will be 45, this the d. Tan 45 is 1. So what will be the tan 45? Opposite by adjacent. So it will be, this also distance will be the d. And this is also 45 degrees. See, object is P, situated at a distance d and d. So first it will reflect on, of the light from the P will reflect on this, and from that it will go to the second mirror. From that it reaches the person with the eye or distance d. So what will be the distance of the image? The image will be formed here, which will be the y-axis will be the d.
uh, P, it will be at D and D. See, light from object P will reflect on the first mirror. From first mirror, it will reach to the second mirror. Through through that, it will reach the person I. The image on the second mirror will be, if we extend the reflected ray, the image will be formed, will be here at a distance. It will be D, and D. It will be the 3D minus D. How the distance between here is, this is also 45-degree triangle. Then the distance here is the D. This is also distance. This is also a D. So D plus D plus D. The distance of the object of the second mirror is 3D. So that the x-axis from the value of the coordinates of the image on x-axis will be the 3D, and from y-axis will be minus D, because it is below the origin, so it will be minus D. And the from the for the second mirror, the object distance is D plus D plus D. It will be 3D. Done. Next question. A circular ring is fixed in a gravity free space and one point of the charge is earth. It does mean that, see, circular ring is fixed in a gravity free space and one point charge is earth, so that the here the voltage will be zero. There will be no current with this. Now a magnet is placed along the axis of the ring. This is the axis of the ring at a distance from its center such that the nearer pole is north pole, as shown in the sharp impulse is applied so that it start is applied on the magnet so that it starts to move towards the ring. अगर ये अगर ये मैग्नेट ये रिंग की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाता है. तो अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ इसमें इंड्यूस्ड करंट इसमें रिंग में करंट ऐसा इंड्यूस होगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना चाहता है. तो इट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन, so that the surface which is closer to the north pole of the magnet will be the north pole, so there will be repulsive force. अगर ये मैग्नेट इसकी रिंग के थ्रू जाते मतलब अवे जा रही है, मतलब इधर से निकल गया, तो then there will be a magnetic field be in a magnetic field will be decreasing from the ring, so that according to the Lenz law magnetic field is decreasing. The current will be induced in such a manner, वो अपोज करके फील्ड को बढ़ाना चाहती है. So it will be always it will be repulsive in at first and it will be attractive at second. So the magnet will retard and comes to rest finally. First, the side which faces the north pole of the magnet will be north. When the magnet leaves away from the ring, then the side which faces the south pole will be north, so that magnetic field, it tries to increase the magnetic field in the system. Still the magnet need to try, वो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा मैग्नेट को इस फील्ड से छुड़ाने के लिए. सो ऑलवेज मैग्नेट हैड नीड टू वर्क, सो magnet finally it comes to it retards and it comes to rest after a while. See, the question they asked is V equals to U plus dt. Acceleration is always denoted in such a manner, it will be the rate of change of velocity. Suppose let's take an object A. At time t, the velocity will be v1. After traveling some distance, at time t2, the velocity will be v2. The
object, the velocity of the object is changed from v1 to v2, then there will be some accelerated motion, yeah, maybe disaccelerated motion. The velocity v1 is greater than v2, maybe yeah, v2 is greater than v1, but there is a rate in change of velocity that will be known as acceleration. Say acceleration equals to v2 minus v1 divided by t2 minus t2. So the total distance, matlab total time difference may be considered as t, then v2 minus v1. v2 will be the final velocity, v1 is initial velocity divided by t. Supposing t1 is considered as at 0 seconds, then after while t2 will be t. So v equals to u plus at. See, the piston is massless and the spring is ideal. The initially stretch the piston and the cylinder arrangement encloses an ideal gas. If the gas is heated quasi-statically, the PV graph. Quasi-statically मतलब जो surroundings के साथ जो system है उसका isothermally equilibrium maintain करती है thermally and mechanically surroundings के साथ. तो इसमें quasi-statically maybe isobaric, isothermal और isochoric और adiabatic. Isobaric मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, isothermal मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, isochoric मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, adiabatic मतलब नो चेंज इन हीट. सी अगर सिस्टम ऐसा हीट किया, उसमें प्रेशर कांस्टेंट रख के हीट किया, then the work done on the system, work done by the gas on the system will be P V1 minus V2. Expand over gas, so there will be a change in volume, so P into V1 minus V2. अगर isoporic है तो volume constant, so work done will be 0. The graph of PV denotes the work done. Graph of PV area under graph of PV मतलब work done है. अगर isothermal है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है. टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ए PV इक्वल्स टू कांस्टेंट. यूजुअली PV इक्वल्स टू nRT. अगर हम ऐसा हीट कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट होगा, सो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट. सो P वर्क डन विल बी इक्वल्स टू P डेल्टा V. ये म्यू RT है, तो चेंज इन वॉल्यूम का हम इंटीग्रेशन करेगा तो ln V2 by V1 in case of isothermal. In case of adiabatic, the equation will be PV power gamma equals to constant. So P1 V1 gamma equals to P2 V2 gamma. Work done will be V1 से V2 का expand हो गया और P delta V. तो what P equals to mu R, PV equals to mu RT. So finally the equation will be mu R T1 minus T2 divided by gamma minus 1. Let's draw the graph between P, V. So हम अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक. आइसोकोरिक में तो वर्क डन नहीं होगा और आइसोबारिक में तो P equals to change in, it will be a straight line in case of isobaric. This will be the in case of isothermal. This will be in case of adiabatic, or this will be case of
Isochoric. The work done during isochoric will be the grades will be more comparatively isothermal and isobaric. The area under isochoric is more comparatively than isothermal and adiabatic. This is the this is adiabatic. This will be isochoric. The graph in case of isochoric, it will be a straight line. There is change due to change in volume. Pressure is constant in case of isobaric. The work done in case of isobaric is great, always comparatively more when compared to isothermal and adiabatic, because the graph is seen. The graph you can see this. The graph the area under PV is more in case of isobaric as compared to isothermal and adiabatic. Next question. Four particles A and B are situated at four corners of a square ABCD of side A. See, A, B, C, D are situated at four corners side A. Suppose particle A, particle B, particles. Each particles move with constant speed. A has velocity along AB. B has velocity along BC. C, D. And C has velocity along CD. And D has velocity along DA. At what time these particles will meet? अगर ये पार्टिकल मीट होना चाहिए तो मतलब ऐसा ट्रैवल करना चाहिए, तो इसकी कंपोनेंट इस v की स्क्वायर की the angle between these two sides will be 90 degrees, diagonal will be 45 degrees. So this component of v is v cos 45. V cos 45, and this component will be, it will be also V cos 45. तो relative speed क्या होगा? V cos 45 plus V cos 45. So root 2V. V by root 2 plus V by root 2. It will be root 2V. हमको पता है speed equals to distance by time. So the distance will be A. It will be root 2A divided by time. Speed क्या है, हमको क्या मिला? root 2V equals to root 2A T. T equals to A by V. At this time, these particles will meet. See, next question. A car is moving towards and approaching a bike. Bike is moving with the velocity 30 meters per second. Frequency of horn sounded by the car is 100 hertz, while it is observed by bike rider as 120 hertz. See, car and bike. बाइक कितना स्पीड से जा रहा है? 30 मीटर पर सेकंड. कार ने हॉर्न बजाया, तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी क्या है? 100 hertz. Heard by the bike rider is frequency observed is 120. Actual duration क्या है? 6 सेकंड. बट बाइक को कितना टाइम पे सुनाई देता है वो फाइंड आउट करना है. एक्चुअली ये पूरा साइकिल्स, इसका जो फ्रीक्वेंसी का साइकिल्स है, it will be f into t. It will be 600 hertz. इसका जो फ्रीक्वेंसी का साइकिल्स होगा
वो हम कैलकुलेट, इसका फ्रीक्वेंसी का साइकिल सेम होना चाहिए। जब कार हॉर्न बजाया बाइक सुनेगा तो सेम होना चाहिए। तो 600 हर्ट्ज इक्वल्स टू 120 ऑब्जर्व्ड बाय द बाइक राइडर। टाइम कितना है? इट विल बी 5 सेकेंड्स। ऐसा भी किसी और की फॉर्मूला यूज करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व क्या है? 20 हर्ट्ज। टाइम, एक्चुअल टाइम ड्यूरेशन क्या है? 5 सेकेंड, 6 सेकेंड्स। फॉर्मूला it will be f observed will be v plus velocity of speed plus velocity of observer divided by velocity of speed plus or minus velocity of source। एक कार ने हॉर्न बजाया तो ये इसमें दोनों टूवर्ड सेम साइड अप जा रहा है तो माइनस करना पड़ेगा। अगर ऑपोजिट साइड जा रहा है तो अप्रोच हो रहा है तो प्लस करना पड़ता है, अगर टूवर्ड्स जा रहा है तो माइनस करना पड़ता है। इनटू फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितना है? 120 हर्ट्ज। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। सो वेलोसिटी ऑफ स्पीड 330। ऑब्जर्वर का स्पीड 30। इसमें वेलोसिटी ऑफ स्पीड 330। सेम डायरेक्शन, कार ने हॉर्न बजाया और उसी के साथ आगे भी कार बढ़ रहा है। तो द स्पीड ऑफ velocity of sound and velocity of car both are in same direction, so we should subtract from speed of light. It will be 30. 120 by sorry it is not 30, velocity of car हम find out करना है। 360 minus 330 minus v, it will be v will be 30 meter per second. Then velocity of car, अब हम कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी ऑफ कार हमको मिल गया और डिस्टेंस, एक कार और बाइक के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो एक्चुअली ड्यूरेशन कितना है? 6 सेकेंड्स है इन दोनों के बीच में। और रिलेटिव स्पीड कितना है इन दोनों के बीच में? साउंड और इसकी बीच में 300। 330 माइनस 3, वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। एक्चुअल ड्यूरेशन कितना है? 6 सेकेंड्स। डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना। रिलेटिव स्पीड हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि कार से हॉर्न बज गया, बट बाइक की रीच होने के लिए 6 सेकेंड्स लग रहा है। मतलब इन दोनों की रिलेटिव स्पीड हम फाइंड आउट करेगा तो डिस्टेंस हमको मिल जाएगा कार और बाइक के बीच में कितना है। इन दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो इट विल बी 330 minus 30, 300. Distance will be 180. हमको टाइम मेजर करना है तो मेजर करने के लिए टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो बाइक राइडर कब सुनेगा? ये बाइक राइडर इससे अवे जा रहे हैं तो उनको सम करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा आ रहा है, बाइक तो अवे अप्रोच नहीं हो रहा है, इसमें अवे जा रहा है तो उसके लिए हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1800 divided by 330 plus 30, 1800 divided by 360, it will be 10 divided by 5, sorry, 10 divided by 2, it will be 5 seconds. It can be हम पहले जैसे कैलकुलेट किया ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी जैसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। पहले हम इसलिए कैलकुलेट किया जो हॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले, मतलब एक्चुअली जितना साइकिल्स है, जब बाइकर भी हर्ट करेगा फ्रीक्वेंसी का साइकिल्स नेवर चेंज, सो वी कैन कैलकुलेट एदर 100 into 6 equals to 120 into x.
it will be 5 seconds. Mostly this is easy while practicing. While during exam we can use this method, but during practice we should remember this formula. See, next question is, a block of mass is suspended by means of ideal spring. From a ceiling car which is moving along circular path. So ऐसा मूव हो रही है. So इसकी फोर्स कांस्टेंट k है. इमेजिन इधर है, ऐसा सर्किल बना रही है, तो इधर से रेडियस r है, तो इधर से इधर गई, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा. तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है. तो पहले स्टार्टिंग वेलोसिटी अज्यूमिंग हम v समझ रहे हैं. ये एक्चुअली ये सर्कुलर मोशन में होगा, तो हम एंगुलर वेलोसिटी का बात करते हैं. तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी ओमेगा. तो बट एट टाइम t, तो फेज डिफरेंस भी आ जाएगा. तो एट टाइम t वेलोसिटी विल बी, नॉर्मली हमको पता है वेलोसिटी ऑफ substance, velocity of object which is moving in SHM या vertical circular motion में है, तो velocity will be a ओमेगा. अगर at time t हमको इसकी velocity कैलकुलेट करना है, तो a ओमेगा, फेज डिफरेंस आएगा sin ओमेगा t plus pi. Acceleration at time t will be acceleration will be dv by dt. So it will be a omega square cos omega t plus phi. A omega sin omega t, it will be the velocity of pendulum या mass suspended by a spring in which is moving in circular, which is moving in oscillation. Velocity will at origin will be a omega sin omega t. At time t it will be a omega, phase difference will be phi, a omega sin omega t plus phi. Acceleration will be dv by dt. माइनस इसकी हम साइन की डिफरेंशिएट करेगा तो माइनस कॉस आएगा, तो माइनस ये ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो m है, तो अज्यूमिंग ये पूरा, इसको हम पूरा x लेगा तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर x. तो ये कांस्टेंट हो गया m ओमेगा स्क्वायर. तो m ओमेगा स्क्वायर विल बी, इस कांस्टेंट को हम स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट बोलेगा. तो ओमेगा विल बी रूट k by m. टाइम पीरियड इज 2 pi by omega, 2 pi by root k by m. It will be 2 pi into m by k. This will be the time period of an block of mass which is suspended by ideal spring with a force constant x. This will be the time period. First we have to calculate the velocity at origin will be a omega sin omega t. Displacement will a sin omega t. Velocity will be a omega sin omega t. तो at time t के पास उसका फेज डिफरेंस हमको ऐड करना पड़ेगा. फिर एक्सेलरेशन विल बी dv by dt. देन हम साइन को डिफरेंशिएट करेगा तो माइनस कॉस होगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा t प्लस 5. F equals to, according to second law of Newton's second law, F equals to ma. तो m a माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा t प्लस 5. तो इसकी वजह से हम ये पूरा सब्सटेंस को x माना जाएगा, जैसे ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. इसको हम इधर सब्स्टिट्यूट करेगा m ओमेगा स्क्वायर x. इस m ओमेगा स्क्वायर विल बी द फोर्स कांस्टेंट. Force will varies with respect to the phase difference. So m omega square constant है, omega will be root k by m. Time period will be 2 pi by m. So 2 pi into root m by k. See, sunlight. Next question. Sunlight falls normally on the surface area given 36 centimeter per. Average force given 7.2 into 10 power minus 9 Newton. Within a time period of t equals to
20 minutes. They are asking this. They said that case of complete absorption. So complete absorb हो गया. There are no reflection. There is no loss. So energy of flux of incidence पूछ रहा है. तो energy of flux of incident की formula क्या है? I equals to I by C into A. Force is 7.2 into 10 power minus 9. I by C is 3 into 10 power 8 into area is 36 centimeter square. ये सारे मतलब SI यूनिट में है, ये अकेला CGS में है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेगा 10 power minus 4 मीटर स्क्वायर. तो हमको आएगा इसकी इंसिडेंट कितने में 7.2 into 3 10 power minus 1 divided by 36 into 10 power minus 4. It will be 0.6 into 10 power 3. These are in SI system, watt per meter square. हमको CGS system में चाहिए, तो 0.06 divided by centimeter square will be option D. This is a formula to calculate the energy of flux of incidence. Energy of flux of incident of light. इसमें तो complete absorption हुआ, तो बाकी जो रिफ्लेक्शन है वो सब नहीं है, और इसमें फोर्स दिया गया और एरिया भी दिया गया. C is the speed of light. Speed of light is 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. और इसमें पहले हमको एरिया को CGS से SI सिस्टम को कन्वर्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद ये पूरा वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करो और I हमको मिल जाएगा. Then that is the answer. See, a metal wire of length L, cross section A, and smallest y is stretched by a force which is force is greater than elastic force of friction. It means that a force इसमें resistance से ज्यादा है तो उसमें elongation दिखेगा, तो elongation of the wire is E. हमको इसमें work done will be half stress into strain into volume of the wire. वर्क डन मतलब क्या है? जो फोर्स की वजह से जो फोर्स है उसने कितना वर्क किया, इस फोर्स ने इस रॉड पे वर्क कितना किया, मतलब F into DL. F will be Y equals to stress by strain. स्ट्रेस मतलब फोर्स कितना है पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस elongation divided by total length. What will be the force? Force will be YAE divided by L. तो हम इधर सब्स्टिट्यूट करेगा तो इंटीग्रेट करना चाहिए, एक एक पार्ट पे फोर्स एक्ट होता रहता है, तो हम पूरा इंटीग्रेट करना चाहिए. YAE divided by L DL. E is a variable, so YA divided by L. L DL का इंटीग्रेशन ये होता है L square small l square divided by 2. So this is the work done. तो उसका हम रीअरेंज करेगा तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ द वायर. सो ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया उसका स्ट्रेस वर्क डन है हाफ, स्ट्रेस क्या है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, स्ट्रेस विल बी strain will be E by L into volume A into L. This is the work done. Work done per unit volume is the energy density of the elastic potential energy. This work done is stored in the form of elastic potential energy. जैसे अगर इसमें ऑटम्स है तो वो इंटरएटॉमिक फोर्सेस की वजह से एक दूसरे से अटैच होता है, तो जितना हम वर्क डन करे, जितना हम पुल करेगा उसमें उतने एनर्जी उसमें स्टोर होगा, तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सो वर्क डन इक्वल्स टू U डिवाइडेड, अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर
unit volume, then it will be energy density. It will be half stress into strain. It will be half F by A into P by L. This is the energy density. The work done by the force F on the rod is stored in the form of elastic potential energy. Elastic potential energy. Done. See, the center of the mass of a system. Okay, they are saying that center of mass is at origin. What will be the possible conditions? The number of particles on x-axis is equal to the number of particles on y-axis. Particles के हिसाब से equal नहीं होता है mostly. Mass, the center of mass will be is at origin, so it will be m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. So product of m1 x1 equals to m2 x2. So जितना particles है उससे कुछ मतलब नहीं है, हमको प्रोडक्ट m1 x1 equals to m2 x2 इक्वल होना चाहिए. टोटल मास ऑन द पार्टिकल्स ऑन x एक्सिस इज सेम एज द y एक्सिस. इसमें हो सकता है अगर मास इक्वल है तो दोनों की डिस्टेंस अगर इक्वल है तो हो सकता है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स मे बी इक्वल. नो, if there is particle on the x axis there must be a particle on the negative x axis. It should be correct. अगर x axis में है तो एब्सोल्युटली नेगेटिव x axis में पार्टिकल होना ही चाहिए. अगर मास इक्वल है बट डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो जैसे एग्जांपल ए m1 m2 equals to m है but x1 x2 is not equal, then product will be not the same. So center of mass origin में नहीं आ सकता है. it may be मतलब इससे हो सकता है बट डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए. पार्टिकल्स इक्वल है, जैसे इस साइड 4 है उस साइड एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 4 है बट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी 4 है, बट प्रोडक्ट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस ग्रेटर देन प्रोडक्ट इज greater when compared to negative x-axis, then the center of mass will not be at the exact origin, so it will not A and B. See, the next may be equal हो सकता है बट y-axis में है तो हम यूजुअली एक डायरेक्शन में एक सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं और दूसरे डायरेक्शन में जैसे एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट अलग होता है और y एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स अलग होता है, तो इट कैन नॉट बी ट्रू, सो इट मस्ट बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस r equals to 3 is spin about its axis. Its angular velocity is 40 square root pi. Is placed between two perpendicular wall. Coefficient of friction. See, they are telling this is the A. So जब भी हम फ्रिक्शन क्या है म्यू इक्वल्स टू 2, सो इधर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा और इधर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा. अज्यूमिंग दिस इज n1 दिस इज n2, सो इधर की फोर्स क्या होगा म्यू n2, इधर की फोर्स म्यू n1 और वेट नीचे एक्ट हो रहा है. तो अब हम इक्वेशन लिखेगा तो n1 equals to mu n2 और mu n1 equals to mg. n1 इक्वल, अब हम इससे n1 कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या उसने क्या पूछा उसके बाद, then it is rotating or they are between two walls the cylinder is rotating. So हम उसका कब स्टार्ट होगा, फ्रिक्शन की वजह से उधर रोटेट होता रहता है बट एक पॉइंट पे वो रोटेशन स्टॉप होता है क्योंकि फ्रिक्शन इज अ रिटार्डिंग फोर्स, उसकी वजह से
वो स्टॉप हो जाता है। तो हमको के वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अपवर्ड फोर्सेस क्या क्या है, म्यू n1 प्लस n2 इक्वल्स टू म्यू n1 प्लस n2 इक्वल्स टू mg। सो हमको लिखना है n2 वैल्यू क्या है इससे। n2 इक्वल्स टू n1 by mu। So n1 plus 1 plus mu square equals to mu mg. n1 will be mu mg divided by 1 plus mu square. What will be the n2? n2 is n1 by mu. So n2 equals to mg plus 1 plus mu square. So torque, what will be the torque? I alpha. हम सिलेंडर का I क्या होता है, हाफ mr स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर इंटू अल्फा। इधर कितना फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इधर इधर n1 की वजह से इधर म्यू n1 फोर्स एक्ट हो रहा है। टॉर्क इक्वल्स टू यूजुअली क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इधर n1 की वजह से फोर्स कितना है, म्यू n1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस r प्लस n2 की वजह से फोर्स कितना है, म्यू n2 इनटू r। सो हम इधर से कैलकुलेट करेंगे अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके हम नेक्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। n1 इधर से कितना आएगा, म्यू कितना दिया 2, m वैल्यू नहीं दिया और g 10 है, 1 प्लस 4, सो कितना आएगा 5, 10m divided by 5, n1 will be 2m, n2 will be n1 by mu, 2m by mu, it will be m, n2 is m, n1 is 2m। so हम इधर सब्स्टिट्यूट करेगा तो कितना आएगा, 2 into 6m into r will be 3 equals to half, m दिया नहीं, r is 3 square 9 alpha, m कैंसिल हो गया और ये गया 18 2 36, 6 4 6 4 24, 6 4 24 into 3 equals to 9 alpha, 3 alpha will be 8. Next we'll substitute alpha value in omega square, v square minus u square equals to 2as। अगर ये एंगुलर मोशन में है तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो फर्स्ट हमको अल्फा मिल गया, फाइनली वो रिटार्ड होकर रेस्ट में आ रहा है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विल बी 0। इनिशियली उन्होंने दिया 40 स्क्वायर रूट पाई, तो इट विल बी 1600 पाई। अल्फा रिटार्डिंग है तो 2 into 8 थीटा, थीटा विल बी 100 पाई। 2 पाई हम कंसिडर करते हैं एक रेवोल्यूशन, 100 पाई को कंसिडर करेंगे 50 रेवोल्यूशन। हम उनको पूछ रहे के वैल्यू, इट विल बी 25 के विल बी 2। पूरा वो 50 रेवोल्यूशंस कर रहा है और हमको के वैल्यू फाइंड आउट करना है। I think this is the last question of the session. We'll continue our session in next class. Thank you so much.